Hello students and welcome back to thermodynamics. In this part of the chapter we were dealing and we are still dealing with spontaneity. हम ये देख रहे हैं कि कैसे earlier we thought that enthalpy can explain spontaneity, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर हमें लगा entropy यानी कि disorder it can explain spontaneity, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ. फिर जब हमने enthalpy और entropy को combine किया, हमने देखा गिब्स फ्री एनर्जी नाम की एक क्वांटिटी आती है, वो एंट्रोपी एक्सप्लेन कर सकती है. सो वी हैव टू कंटिन्यू. एक और चीज हमने ये देखी थी, वी हैड आल्सो सीन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज सिस्टम का एंट्रोपी एंड सराउंडिंग का एंट्रोपी, द टोटल डिसऑर्डर रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स, इट इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, अब हम एंथैल्पी और एंट्रोपी इन दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करके गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं एंड गिब्स फ्री एनर्जी कैन एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी. लेट्स क्विकली सी हाउ दैट इज पॉसिबल. हमने एक इक्वेशन यहां तक डिराइव की थी. हमने ये देखा था दैट टोटल एंट्रोपी चेंज इज नथिंग बट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. अगर इस इक्वेशन को हमने थ्रू आउट T यानी कि टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट डू वी गेट? हमको मिलता है T इंटू डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट T इंटू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम माइनस डेल्टा एच. इस इक्वेशन को यहां पर आप देख सकते हैं. दिस इज द इक्वेशन. ऑलराइट, यहां पर अब अगर मैं इसको थ्रू आउट नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, I will get minus T delta S total is equal to, अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, I will get delta H of the system minus T delta S of the system. I hope this is clear to all of you. लेकिन अभी जो हमने इक्वेशन देखी थी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं उसको, अभी जो हमने ये इक्वेशन देखी थी, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. और यहां पर हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का RHS और इस इक्वेशन का RHS कॉमन है. सो वी कैन राइट दैट डेल्टा G इज नथिंग बट माइनस T डेल्टा S टोटल. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है बिकॉज अब हमको ये पता चलता है कि एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज से हम गिब्स फ्री एनर्जी रिलेट कर सकते हैं. अगर टोटल एंट्रोपी चेंज हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकता है, तो डेल्टा G भी हमको स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकता है. और यहां पर एक बहुत ही की एलिमेंट होगा टेम्परेचर. वो कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, बट पहले यह समझ लेते हैं कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो वहां पर टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन जीरो. और अगर डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G का आंसर क्या आएगा? आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं, इट विल बी नेगेटिव. यहां से ये चीज प्रूव होती है कि डेल्टा G अगर आपने नेगेटिव निकाल लिया तो यानी कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू हैव अ न्यूमेरिकल एंड दे आस्क यू एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, you can either prove that delta G is negative by using the Gibbs-Helmholtz equation, or you can also prove that the total entropy change is positive, and that is by using this particular equation. I hope that is clear to all of you. Now, remember one thing, if in the numerical it has been asked by the paper setters to use a certain method, calculate delta S total and predict the spontaneity, तो वहां पर even if you use this equation, you will get the correct answer, but you will not get the marks. In that case, if they have already specified the method which you have to use to predict spontaneity, then you have to make sure that you use that particular method. Okay. Now, अगर non-spontaneous process होता है तो हम जानते हैं वहां पर entropy of the universe decrease होती है. So it is less than zero, negative. नेगेटिव को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, डेल्टा G का आंसर आएगा मुझे पॉजिटिव. और मान लीजिए अगर इक्विलिब्रियम पे है ये रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे तो एंट्रोपी चेंज वहां पर नहीं होता, तो डेल्टा G भी वहां पर जीरो आता है.
delta G is 0 at equilibrium. I hope this is clear to all of you. It's a very simple concept, but it's a very important concept. यहाँ से हम spontaneity के numericals solve कर सकते हैं by using those two formulae. Again, now one thing that we need to remember is that Gibbs free energy, that is the free energy of the system which is used in doing useful work. It's a state function because I have just told you that there are only two path functions in thermodynamics, work and heat. सिर्फ ये दो path functions होते हैं. तो यहां पर जो delta G आएगा, Gibbs free energy, that is a state function. Okay? तो अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में समराइज करूं तो यहां पर मुझे ये सब पता चलता है कि सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है. इट इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड इन डूइंग द एक्चुअल वर्क, द यूजफुल वर्क माइनस ऑल द लॉसेस. इट कैन बी कैलकुलेटेड by using delta G is equal to delta H minus T delta S, also known as the Gibbs-Helmholtz equation. अगर यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अनदर टॉपिक of another chapter called electrochemistry. Electrochemistry में Nernst equation करके एक सब टॉपिक आता है. This is related to Nernst equation. Anyway, I will talk about that later. Right now, I would like to give you a simple equation. When all the substances are there in their standard states, you need to understand that this equation is followed. Delta G is equal to delta G naught. अब आपको याद होगा naught यानी कि स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन प्लस आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ क्यू. ये जो क्यू है इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट. आपके 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में इक्विलिब्रियम में यू विल फाइंड व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट. ओके, नेचुरल लॉग यानी कि लॉग टू द बेस ई. अगर हमें नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हमें बाहर निकालना पड़ता है 2.303. ये बात मैंने आपको W max वाले डेरिवेशन में समझाई है ऑलरेडी. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट डाउन कि यहां पर कौन सी क्वांटिटी क्या है. डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड चेंज in Gibbs free energy. You have R, which is the universal gas constant. You have temperature, that is represented by T. You also have Q, that is reaction quotient. जैसा कि मैंने आपको कहा, ये आपको 11th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. What is reaction quotient? Normally अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए इस तरह से हम रिएक्शन quotient को रिप्रेजेंट करते हैं. Concentration of product raised to stoichiometric coefficient divided by concentration of the reactant raised to stoichiometric coefficient. Okay, अगर मान लीजिए reactants में या products में कोई गैस है तो हम concentration की जगह उसका partial pressure लेते हैं. Okay, so you might remember this with the equation AA plus BB gives CC plus DD. And what was reaction quotient? It was concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. So it is the concentration of product upon reactant each raised to the respective stoichiometric coefficient. Okay, I hope this is clear to all of you. अब यहां पर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जस्ट अभी हमने देखा है डेल्टा जी 0 हो जाता है और reaction quotient, that is Q, it becomes equal to equilibrium constant. तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर सकता हूं, फिर से इन चीजों को मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. एंड आई कैन राइट 0 is equal to delta G naught plus RT into natural log of K. I can rearrange this equation and this is what I will get. Delta G naught is equal to minus RT into natural log of K.
यहां पर नेचुरल लॉग पे तो मेरे लॉग टेबल्स नहीं चलेंगे, उसे log टू द बेस 10 में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एज आई टोल्ड यू, यहां से 2.303 को अगर मैं बाहर निकालूं तो आई कैन गेट डेल्टा जी नॉट is equal to minus 2.303 RT log of K. Okay, this is a very important equation, but remember this equation can only be used at equilibrium. अगर equilibrium condition specify नहीं की है तो हमें ऊपर वाली equation use करनी पड़ेगी, delta G is equal to delta G naught plus RT into natural log of Q. That is the equation which I will have to use if the equilibrium condition is not specified. However, if it is equilibrium, I can use this equation. Okay, the lower equation. I hope this is clear to all of you. अब यहां पर मैं spontaneity predict कर सकता हूं with the help of this equation, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, spontaneity अलग अलग चीजों की हम predict यहां पर कर सकते हैं, exothermic या endothermic nature delta H, एंट्रोपी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डेल्टा एस, इन दोनों को कंबाइन करके अब हम स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम यहां पर देखेंगे। लेट्स से अगर मेरे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है, जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है एंड एंट्रोपी यहां पर बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ओके, हीट इज बीइंग लिबरेटेड एंड ऑल्सो द सिस्टम इज बिकमिंग रैंडम, इट इज बिकमिंग disordered, entropy is increasing. अगर ऐसे जगह पे अगर आप डेल्टा जी के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव एंड सिंस डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ओके, तो यहां पर जो आपको ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा जी का वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव का जो अरिथमेटिक सम होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, दे आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करते, हर टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। ओके, these kind of reactions, these kind of processes are spontaneous at all conditions. Now this makes sense because any reaction which is highly exothermic and the entropy of this reaction is increasing is going to be spontaneous. For example, I have hydrogen peroxide in front of me, which I have poured into this beaker. So I'm going to take this hydrogen peroxide, H2O2, I'm going to put it in the conical flask. Many of you must have seen hydrogen peroxide, H2O2, at the doctor's clinic, where they apply hydrogen peroxide on the wounds. Also, I have potassium permanganate crystals in front of me. So you can see these crystals, nice and shiny crystals, right? So I'm going to take these crystals and I'm going to add it to hydrogen peroxide. So this reaction is H2O2 plus KMNO4. As I told you, it's highly exothermic and entropy increases. Let's see whether it is spontaneous or not. So there we are. You just saw how much of gas was given out in this reaction, right? The entropy increased by a huge magnitude and this reaction is pretty exothermic. I mean, this conical flask is pretty hot now, right? So such reactions which are highly exothermic and they increase the entropy in the system, they are spontaneous. Well, हमने ये देखा that there are these reactions which are exothermic, they give out heat and they become high entropy systems. Okay, they are always spontaneous. Let's move on and let's see those processes which are exothermic, they give out lots of heat, but at the same time the entropy is now decreasing, they become more ordered. Entropy is decreasing. Okay, now if you substitute these signs of delta H and delta S, you will see that delta H will be negative. But since delta S is negative here, minus T into minus delta S will give you a positive term. So enthalpy change will be negative, but the entropy term will become positive. अगर
मुझे यहां पर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है. इफ आई वांट टू कीप माय प्रोसेस spontaneous, I want delta G to be negative. I want to make sure that the negative term, the delta H term, it wins. And the only way to do that is by decreasing the temperature, because if the temperature decreases, the positive term will become very small. So I can say that this is going to be negative only at low temperature. अगर temperature कम रहा, okay, if the temperature decreases, तो T delta S का value इतना कम हो जाएगा कि मेरा जो delta H का value है, उसका negative term वो ज़्यादा भारी पड़ेगा. So there are these processes which are exothermic, but they are becoming more ordered. They are spontaneous only when the temperature is low. And this makes perfect sense, because at low temperature like this, water freezes automatically, water freezes spontaneously. So if you take some water and you just keep it for long enough, right, after some time you will see automatically this water will freeze, because the heat inside this water will now go away. So this is an exothermic process where energy is being released. Also, the water molecules will now become ordered. So it's a process where energy is being released, that is exothermic, and the entropy will decrease, and this process will happen at low temperature. So without giving any energy, this water will get converted into ice after some time. I should really be getting out of here now. Now, we have seen that there are these type of processes. Some of them are always spontaneous. There are others which are spontaneous only at low temperature. But what about a combination where the process is endothermic and the entropy is increasing, the system is becoming more and more disordered, random, entropy is increasing. Now here if you see, the delta H value is positive and delta S value is also positive. If you substitute this in the equation, now delta H will be positive, okay, minus T into delta S, which means the equation is not really going to change. This is exactly how it will be. Okay, delta H भी positive रहेगा, delta S भी positive रहेगा. Again, if I want this type of process to be spontaneous, अगर मैं चाहता हूं कि इस तरह का process spontaneous रहे, तो मुझे temperature को बढ़ाना पड़ेगा, because if the temperature increases, अगर temperature बढ़ जाएगा, T delta S का value बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, the negative term will become so heavy that my answer delta G value will be negative. So only if the temperature is high in this case, okay, this process will be spontaneous. And again, इसका एक example है हमारे पास. We have ice, okay, ice जो है वो energy absorb करती है, endothermic process, and it gets converted into a liquid which is more disordered. Okay, entropy भी बढ़ रही है यहाँ पर और endothermic process भी है, और हमने देखा है कि ये warm climate में होता है where the temperature is high. Okay, experimentally, again, this makes sense, because in a nice, comfortable, hot tropical weather, if you take ice and you keep it for long enough, you will see that after some time, the ice will expand into liquid by absorbing energy. This process is endothermic, where the entropy is now increasing, right? And this process happens spontaneously. I am not giving any energy. It's just drawing out energy from the surrounding. And after some time, you will see that this ice has melted into water. And this process happens spontaneously without giving any kind of energy. All right, so we have also seen that these type of processes are spontaneous only when the temperature is high. The last category is of course the converse of the third case, that is the process will be now endothermic, heat will be absorbed and the system will become more ordered. This is weird, you know, heat is being absorbed
and the system is becoming more ordered. ऐसा तो normally होता नहीं है. Equation wise भी अगर आप देखोगे तो you substitute positive for delta H and negative for delta S. तो minus T into minus delta S will give you a positive term and delta H is anyway positive. यानी कि आप यहां पर टेम्परेचर कम करो बढ़ाओ, it doesn't matter, इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. यानी कि इस तरह का जो प्रोसेस है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर. तो यहां से हमने स्पॉन्टेनिटी की जो पहेली थी, स्पॉन्टेनिटी का जो रिडल था, something that we were not able to understand with the help of enthalpy and entropy alone, when we combine them together, now we are able to predict if a process will be spontaneous or not. Okay, I hope you've understood this concept, all of you. Now here we also have to see the different types of formulae जिसके ऊपर यहाँ पर numericals पूछे जा सकते हैं. हमने देखा है type 1 related formulae. We have also seen formulae related to type 2. Okay, these are all the things that we have seen. Now let's sign convention भी हम लोग ने देखा था. We had seen the sign convention of different quantities. Now let's quickly see type 3 formulae. ठीक है, type 3 formulae एक बार हम फटाफट स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले delta S total is delta S system minus delta H system divided by temperature. यहां पर अगर हम प्रूव कर लें कि डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स अगर वो पॉजिटिव है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. ओके, द सेकंड फॉर्मूला इज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. इन दोनों ही प्रोसेसेस से, इन दोनों ही फॉर्मूले से हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को टेस्ट कर सकते हैं. पहले वाले में आपको ये प्रूव करना है दैट डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, एंड दूसरे वाले में आपको ये प्रूव करना है दैट डेल्टा जी इज नेगेटिव. ओके, सो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल हैज टू बी प्रूव्ड टू बी पॉजिटिव, डेल्टा जी हैज टू बी प्रूव्ड टू बी नेगेटिव. आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अनलेस इफ इन द न्यूमेरिकल इट इज स्पेसिफाइड, ओके, दैट यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. एक चीज यहां पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक क्वांटिटी जो है उसको जूल्स में दे दिया जाता है और दूसरे क्वांटिटी को किलो जूल्स में दे दिया जाता है. सो जस्ट अ स्मॉल नोट इन योर न्यूमेरिकल, मेक श्योर दैट द यूनिट्स आर कंसिस्टेंट. अगर किलो जूल में कुछ दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू जूल्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000. एनीवे, द थर्ड फॉर्मूला हियर इज गोइंग टू बी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट plus RT into natural log of Q. This formula is useless if you use natural log, because natural log को हम log table apply नहीं कर सकते. तो for that what we can do is we can remove 2.303 out, and accordingly we can use our log tables for the value of Q. This formula will be used only and only at non-equilibrium condition. At equilibrium, however, अगर equilibrium की condition दी हुई है तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT इंटू लॉग ऑफ के. ओके, के यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. द नेक्स्ट फॉर्मूला, एज आई टोल्ड यू दैट दिस फॉर्मूला इज ओनली अप्लाइड एट इक्विलिब्रियम, जहां पर डेल्टा जी 0 हो जाता है एंड क्यू का वैल्यू के से इक्वल हो जाता है. अनदर फॉर्मूला हियर इज डेल्टा एस नॉट. डेल्टा एस नॉट आप कैलकुलेट कर सकते हो. आपको प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज आपको दी होंगी. स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज विल बी गिवन टू यू. जिस तरह से हमने डेल्टा एच के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, उसी तरह से हम यहां पर डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि इक्वेशन के अंदर डेल्टा एस वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस, लेकिन हमें कंपाउंड्स की इंडिविजुअल एंट्रोपी वैल्यूज दी जाती हैं. तो आप यहां पर डेल्टा एस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर 5. Okay, that's very simple. Okay, so this was a very important concept related to spontaneity. I hope you've understood. If you've got any doubts related to this concept, you can feel free to reach out to us. Thank you so much for watching. Do like, share, comment and subscribe, and also press the bell icon so that you do not miss our latest updates. Thank you so much.